Panchamukha Hanumat Kavacham and all about. The Panchamukha Hanuman Kavacham is a devotional hymn dedicated to Lord Panchamukha Hanuman, a form of deity Hanuman with 5 faces. It is a mantra believed to offer protection to devotees like a kavacham, a protective shield from evil forces. The hymn is said to have been taught by Lord Rama to Goddess Sita at her request. The Panchamukha Hanuman form is rooted in Ramayana, where Hanuman took this form to rescue Lord Rama and Lakshmana from clutches of Mahiravana, a Rakshasa who ruled Patalaloka. To help Ravana, the Mahiravana kidnapped Rama and Lakshmana and took them to Patalaloka. To kill Mahiravana, who had a boon that required extinguishing 5 lamps in different directions simultaneously. So, Hanuman manifested his Panchamukha form with 5 faces, that is, Hanuma, Haigriva, Narasimha, Garuda and Varaha. By extinguishing the 5 lamps with his 5 faces simultaneously, Hanuman defeated Mahiravana and rescued Rama and Lakshmana. Panchamukha Hanuman is depicted with 5 faces: Hanuman east, Narasimha south, Garuda west, Varaha north, Haigriva urdhvamukha. Multiple recitations of this stotra is believed to yield different benefits such as wealth, victory, knowledge and all-round protection. Panchamukha Hanumat Kavacham. Om Asya Sri Panchamukha Hanuman Mantrasya Brahma Rishihi Gayatri Chandaha Panchamukha Virat Hanuman Devata Hrim Bijam Srim Shaktihi Krum Kelakam Krum Kavacham Kraim Astraya Patta Iti Digbandhaha Sri Garuda Adhadhyanam Pravachyami Sunu Sarvanga Sundari Yatkrutam Deva Devena Jnanam Hanupati Priyam Panchavaktam Mahabhimam Tripancha Nairjutam Bahubhir Dasa Bhurjuktam Sarvakamadhididam Purvantu Vanaram Vaktram Koti Surya Samaprabham Nashtra Karala Vadanam Murkuti Kutileshanam Astvaiva Dashanam Vaktram Narasimham Mahadbhutam Achugratejo Abhusham Veshanam Bhayanashanam Pachimam Garudam Vaktram Vakratundam Mahabalam Sarvanaga Prasamanam Vishabhutadi Kruntanam Uttaram Sokaram Vaktram Krishnam Deeptam Nabhopamam Patala Samavetala Vera Rogadi Kruntanam Urdham Hayananam Ghoram Danavanta Karambaram Yena Vaktrena Viprendra Tarakaksham Mahasuram Jakana Saranam Tasyat Sarvasitru Harambaram Jyatva Panchamukham Rudram Anumantam Dayanidhim Kadgam Trisulam Katvangam Pasamankusa Parvatam Mushtim Kaumodakim Vriksham Dharyantam Kamandulam Pindipalam Gnanamudram Dasabhirmani Pungavam Yachanayatha Jalani Dharyantam Bhajamyaham Priyata Sunopavishtam Tam Sarvabharan Bhushitam Divyam Alambardharam Divya Gandhanalepanam Sarvachramayam Devam Anumat Visutomakam Om Panchashamachyutamaneka Vichitravarnavaktram Shashanksikaram Kapirajavarjama Petambaradi Mukute Rupasobhidangam Pinga Kshamajamarisam Manasasmarami Markatesam Mahotsaham Sarva Sitru Haramparam Sitru Samvaramam Rasha Sevan Navadamuddhara Om Harimarkadam Markadam Mantravidam Parilikyati Likyati Vamatale Edi Nasyati Nasyati Sitrukulam Edi Munchati Munchati Vamalata Om Harimarkataya Swaha Om Namo Bhagavate Panchavadanaya Purva Kavimukhaya Sakala Setu Samharkaya Swaha Om Namo Bhagavate Panchavadanaya Dakshinamukaya Karala Vadanaya Narasimhaya Sakala Bhuta Pranavadhanaya Swaha Om Namo Bhagavate Panchavadanaya Pachamukhaya Garudananaya Sakala Vishaharaya Swaha Om Namo Bhagavate Panchavadanaya Uttaramukhaya Divarahaya Sakala Sampatkaraya Swaha Om Namo Bhagavate Panchavadanaya Urdhvamukaya Haigrivaya Sakala Janavashankaraya Swaha Om Asya Sri Panchamukha Hanuman Mantrasya Sri Ramachandra Rishihi Anushtup Chandaha Panchamukha Veera Hanuman Devata
हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंदिनीसुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत्। ओम अंजनीसुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ओम अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम रावदूताय कंशिकाभ्यां नमः। ओम पंचमुख हनुमते करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ओम अंजनीसुताय हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम वायुपुत्राय शिखाय वषट् अग्निगर्भाय कवचायहम्। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय औषट्। ओम पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट् पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंहखगराट्टोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं ऋचा हस्ताब्जरसिकेटपुस्तक सुधा कुम्भाङ्क साद्रिं फलं खट्वाङ्गं पनिपूर्वं दशभुजं सर्वारि वीरापहम्। अथ मन्त्रः। श्रीरामदूत आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीता दुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकल ब्रह्माण्ड विश्वरूपाय सप्तसमुद्र निर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनाय अमितिक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जिदाङ्गद लक्ष्मणमहाकविसैन्यप्राणदाय दशखण्डविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय तत्प्रयोगागम पंचमुख वीर हनुमन्मन्त्रे जपे विनियोगः। ओम हरिमर्कटमर्कटाय बम 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 औषध स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय फम 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 फट स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय खेम 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 मारनाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय लुम 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 आकर्षित सकल समुत्कराय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा। ओम टम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुख वीर हनुमते परयंत्र परतंत्र उच्चाटनाय स्वाहा। ओम कम खम गम गम ञम चम छम जम झम ञम टम टम डम ढम नम तम थम दम धम नम फम फम बम बम मम यम रम लं वम शं शं सं हम लं क्षं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकभिमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रुसंहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकलविषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हैग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ओम अग्निसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्री रामचंद्र कृपापादुकाय महावीर प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुख वीर हनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्र उच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्री रामचंद्र वरप्रसादाय जम 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 स्वाहा। यतं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपोस्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं च पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं अष्टवारं पठे नित्यं इष्टकामादिसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमाप्नुयात्
दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्वेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधातिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।